ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। हम खरीदने बेचने की सलाह नहीं देते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में मार्केट रिस्क होते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। I'm your host, Rachna Pandey, and today we are diving into a very fascinating and powerful topic in the world of trading, that is, market psychology and trading strategy. It is a perfect combination of emotion and logic, a combination that separates a great trader from the rest. To give more insights on this topic, we have with us an incredible guest, Mr. Hardik Kotecha. Hardik Kotecha stands out as a leading Funda-Tech Analyst and professional trading mentor with a certified background from a reputed organization. He has deep expertise in derivative markets and is acclaimed for delivering high long-term returns. Hardik's educational style emphasizes a practical approach, combining fundamental and technical analysis. He has deep knowledge of market psychology with hands-on trading skills. His credentials include being a top mentor in 2024 and successfully training over thousands of traders globally. Hardik is known for his ability to adapt evolving market conditions and for promoting both discipline and resilience in achieving trading success. Welcome, Mr. Hardik. Thank you, Rashram. So let's explore that how psychology plays a hidden yet decisive role in every trade we make. Ma'am, when we talk about the psychology on a trading, सबसे पहली चीज जब भी हम बात करते हैं then when we are dealing with the market, what is a market? आप सुबह उठते हो 9:15 मार्केट खुल जाती है, 9:09 से लेकर 3:30 बजे हर एक चीज जो मार्केट करती है, हर एक एक्शन, हर एक मूव which is being taken, which is being done by the market, it itself has got its own psychology and it's working. उसी बिहेवियर के साथ आप बात करो, उसके बिहेवियर के साथ जो स्टडी कर, that is a human psychology, that is a psychology of a market. हम लोग एक सिंपल से टेंडेंसी में बात करें, सिंपल टेंडेंसी में, and when we take an example of market, कि मार्केट सुबह ऊपर हुई, उसके बाद ये भी सीन that the market is going on the upper end, बढ़ती जा रही है, कम हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो उसका केस में अगर बात करो तो there is a inflow of money. The inflow of money rules the market and the psychology to study. That is called the psychology of a market. Exactly. As it is rightly said, market is not alone driven by logic, but by emotion. Man, the emotion is market and never run by the emotions. If you run by the emotions, always be perfect, always get ready for analysis. अगर मार्केट में आप इमोशन लेके आओगे तो मार्केट में कभी ना तो आप ट्रेड कर पाओगे ना इन्वेस्ट कर पाओगे, क्योंकि हम लोग के बहुत ही फ्रॉम whom I learned, I've done the analysis from whom I learned, उनके एक सिंपल से स्ट्रेटजी थी, never make market a buy, always make it a benefit, कि जिसके साथ आपके इमोशंस अटैच ना हो. कभी भी मार्केट को आप स्टडी करोगे एट द टाइम जब सिग्नल्स आ रही है, अगर उसका सिग्नल आ रहा है कि सुबह आके आ रहा है कि भी मार्केट 200 पॉइंट गेट अप हुआ है एंड द सिग्नल्स आर शोइंग दैट यू टू गो डाउन, यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है, इट इज अ टॉपिक ऑफ रजिस्टर्स, तो उसके साथ प्यार करके बैठोगे, शायद जब खबरोगे खड़ा होगा, वो सीधा नहीं चाहिए जाने वाला है, आपकी जेब खाली करेंगे. तभी गर्लफ्रेंड जैसी चाहिए भी जो आपकी जेब खाली करती रहे, या वाइफ चाहिए जो आपकी जेब बढ़ती रहती है, तो चेक इट आउट. So never consider market as a with emotions. That is so good. Now, can I say that what I am interpreting, can I say that to understand the market, you have to understand the human behavior? Can we say that? Exactly right. Whenever we want to deal with the market, सबसे पहली चीज जो आ रही है कि कोई भी स्क्रिप्ट या कोई भी इंडेक्स, उनके जो मोमेंटम जो चल रहा है, सबसे पहले पैसे कहाँ से लग रहे हैं. To study the psychology of the money, that is most important for any market, or to gain any amount of profit. आप अगर पैसे में फ्लो या आप उसको चेक नहीं कर पा रहे कि उसके साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तब पैसे कमाओगे उस पैसे का, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे बनेगा. अगर पैसा जा रहा है, एफ की बात करें, DS की बात करें, वो पैसे निकाल रहे हो और आप डाल रहे हो, तो उनके स्क्रिप्ट से आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हो, और प्राइसेस उनके पास इतना पैसा है कि वो फ्लो डाउन करते जाएंगे, and you'll be getting a trap, because they are sort of a trap for.
तो साइकोलॉजी इज समथिंग, आप उस साइकोलॉजी को पकड़ो, पैसे के साइकोलॉजी को पकड़ो, एंड देन यू रन विद द एंटायर शो ऑफ द मार्केट. So as we can clearly see that Hardik sir is not into the emotions with the market. So let's shift our focus to the logical part. As we know that psychology is emotion. So logic is structure. Can you brief a little bit about the key structures that the trading strategies can be used by traders to navigate these market swings? Ma'am, psychology becomes is a law with the logic can run the market. If you want to be successful in the market, you want to be a successful trader, or you want to be a successful investor, the first thing is that you need to control your psychology. सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर मार्केट में कुछ भी हो रहा है, मार्केट आपने परचेस किया, you purchase a specific stock at a rate of 100 rupees, it has gone up to 110, 115, and then exit the position by earning a 15 rupees. But आप अगर बेचो तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ से मार्केट डाउन होगी, वो मार्केट ऊपर जा सकती है, डाउन भी हो सकती है, बिकॉज यू डोंट रन द मार्केट दैट द मार्केट रन्स यू. दोनों अपने हिसाब से चलते हैं. अगर वो प्राइस ऊपर जा रहे एंड देन यू फील दैट द थिंग्स आर गेटिंग माइंड आर गेटिंग डिस्टर्ब, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं निकल गया, मैं रह गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो फोमो सबसे पहले जो चीज आती है, तो उसमें दैट डिस्टर्ब योर साइकोलॉजी. वो साइकोलॉजी से आप उसमें यू टेक सम डिफरेंट स्टेप्स लेने के बाद यू फील दैट कि भाई 115 में दिया, 120 में दिया, 125 दिया, 125 में आप नहीं निकले पर मार्केट ने और रिवर्स ले लिया, और जो 115 का था वो 100 पे आ गया, 90 पे आ गया, एंड देन व्हाट, यू आर लूजिंग योर मनी. सो दैट्स अ डिफरेंट साइकोलॉजी ऑफ अ FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट. तो उसमें से हम लोग बात करें, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ FOMO व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर साइकोलॉजी. उसके साथ साथ हम लोग लॉजिक की बात करें, तो लॉजिक में सबसे पहली चीज ये है दैट यू शुड कंट्रोल योर साइकोलॉजी. आप FOMO में कभी नहीं आना है. वी शुड ऑलवेज गो विथ लॉजिक. लॉजिक क्या कहता है कि सबसे पहले ट्रेंड देखो, ट्रेंड अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, अगर मार्केट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, अगर ये कंसोलिडेट कर रही है, अगर मार्केट ऊपर जा रही है और आप नेगेटिव ट्रेंड में अगर आप ना रहें तो सिचुएशन क्या होगा? रिस्टर थिंग वुड बी दैट यू आर पुटिंग योर मनी, तो मार्केट इज इन नेगेटिव साइड एंड यू विल बी लूजिंग इट. आप पैसे डाल रहे हो और मार्केट तो नीचे जा रहा है, 100 रुपये में लिया, 90 में रुपये में लिया, फिर आप 85 हो गया, 85 आप ले रहे हो, 80 में ले रहे हो, मार्केट तो मेकिंग लॉस. तो वो लॉस जो बता रहे हैं वो आपको लॉस्ट में काउंट हो रहे हैं बेसिकली. तो वो अगर आप कैलकुलेशन करो तो द बेस्ट थिंग इज दैट यू शुड अंडरस्टैंड द ट्रेंड. ट्रेंड के साथ दूसरी बात करो तो ऑल्टरनेटिव ट्रेडिंग फॉर्मेशन होने चाहिए कि भाई आप कंटिन्यूस फॉर्मेशन आप एक पकड़ रहे हो, कि भाई आप ट्रेंड आपने जो पकड़ लिया उसके साथ मनी फ्लो किस तरह जा रहा है, उसकी रेंज कहाँ पे, सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे, ये सारी चीज़ें यू एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्व इट आउट बिफोर मेकिंग एनी ट्रांजेक्शंस एंड बिफोर going towards any trade. There's the best thing, which is always an equals thing. The third thing, if you talk about, कि आप ये कर लिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लिया आपने, ट्रेंड उसका एनालिसिस कर लिया, प्रोटेक्टिव ट्रेडिंग आपने परफॉर्म इट आउट in the proper manner. And the third thing is that you should always go with a proper distance of education. कि आप कौन से स्क्रीन पे डाल रहे हो, if your screen is in a proper trend, उसका बिजनेस किया जा रहा है. सबसे पहली चीज ये हो रही है कि उसका फंडामेंटल स्टडीज would be the most important thing. फंडामेंटल के बाद the second step would be the technical. अगर फंडामेंटल कम दिस शो में कितना पैसा डालो, आज नहीं तो कल वो आपको पैसा डूबा नहीं. So in other words, we can say it's not about controlling emotions, but designing systems to prevent them in interfering in the first place. Exactly. If you say कि भाई हम लोग साइकोलॉजिस्ट पकड़ के चल रहे हैं, अपने इमोशंस को पकड़ के चल रहे हैं, सबसे पहली चीज ये है कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ही पड़ेगा. देयर आर नो इमोशंस इन द बिजनेस. अगर आप कोई भी हिसाब से काम कर रहे हो, अगर आपको सिग्नल्स दिख रहे हैं कि भाई जिसमें ये मार्केटर्स इन ऑल सोल्ड कैटेगरी और इन ऑल वर्ड कैटेगरी, तो उसमें आप अपोजिट पोटेंशियल पोजीशन के दो, वो पोटेंशियल में ही आपको पैसा मिलेगा. मार्केट ऊपर जा रहा है, दूसरे कैटेगरी में क्या कितना जाएगा ऊपर, उसकी कोई लिमिट नहीं है, नीचे जाएगा उसकी भी कोई लिमिट नहीं है. बट यू ऑलवेज हैव एन लिमिट. या आपने 200 रुपये डाले हैं तो 200 रुपये में कितना लॉस आप बेयर कर सकते हो. कहने के लिए ये भी कहते हैं लोग कि भाई इसमें डर बार सब बिक जाता है. मार्केट इज अ सॉर्ट ऑफ अ प्लेस वेयर यू लूज एनी एप्पल ऑफ मनी. बट वो एप्पल को अगर आप कंट्रोल नहीं कर,
if you can't control the losses in it, then it's sort of a bullshit thing in which the trends out there. Up the psychology is the most important. कि जिसको आप emotions को set the tokens. So now let's address the darker sides of trading, like the psychological traps, we can say. Can you address some of the psychological traps, the ones in which the traders usually fall into? And this most important thing, if you talk about darker side of the Indian traders की बात करें हम लोग, सब derivatives में खेलना चाहते हैं, सबको पैसा बनाना. अजाउट पे लेके आ गए and everyone wants to make. अजाउट में देखा सुबह तक मुझे 1500 का प्रॉफिट होना चाहिए. अजाउट पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, हम लोग अपनी बात करें, we are giving the client 2-3% return monthly, then we think that client has earned a very good amount. महीने का 3% आप पकड़ो तो साल का 36% हुआ. कौन सी बैंक आपको 36% रिटर्न देंगी, या कौन सी इंस्टीट्यूशन विद द सेम फॉर्मेशन आपको इतना रिटर्न देगा? सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू आर डूइंग, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉजिकल चीज आप पकड़ते हो उसमें कि क्वेश्चन आपका क्या है बेसिकली कि इसमें क्या फैक्ट्स है, ट्रैप है. बट ट्रैप में आप सबसे पहली चीज है कि आपकी साइकोलॉजी को आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो. जैसे हमारे एक क्लाइंट है, वन ऑफ माई क्लाइंट वाज he just opened an account, and the first thing you will ask that, can I need it to derivatives? Yes sir, you can take it to derivatives, आपको कोई इशू नहीं है. सबसे पहली चीज ये हुई कि bought up what the उस टाइप की बात है, the experience used to be on Thursdays. He bought a share, he bought a coin saying that whether 200 रुपये पे ये कॉइन दिया हुआ है ऑफ अ निफ्टी, 200 रुपये से लेकर the next day he bought it on Monday. On Tuesday, he said that this car be so come more. Then he bought it at 178 or 179 में वापस he bought some more quantity. Never know. दूसरे दिन मार्केट और कम हुई, थिंग वे लाइक 50 पॉइंट और कम हो गए, थिंग वे लाइक कि और उस पर 10-20 रुपये और कम हो गए, 30 रुपये और कम हो गए. उसने वापस खरीदी की वेडनेसडे को, एंड थर्सडे को वापस उसने खरीदी की. एंड एट द एंड ऑफ द डे द थिंग वाज दैट 3 बजे इट वाज समथिंग लाइक 10-15 पैसे के आसपास कुछ चल रहा था. एंड ही वाज लाइक नहीं अभी तो मैं सबसे ज्यादा पड़ेगी, तो जितना था खेती क्वांटिटी परचेस की थी तुम थी एंटर्स के पूरी की पूरी जितना ज्यादा था ये पुट एट समथिंग अराउंड 15 लाख ऑफ रुपीज, 50 लाख की ऑर्डर 1 करोड़ की क्वांटिटी लेंगे. एंड सेकंड इन द मॉर्निंग इज गिविंग अ कॉल एंड सेइंग कि हार्दिक भाई ये तो मैंने लिया था, अभी ये बिक क्यों नहीं था? तो क्वेश्चन में सर आपने क्या थर्सडे को दिन आप इतना ले रहे हो, 1 करोड़ रुपये इस कॉल पे डाल रहे हो, इट्स गोइंग टू गेट एक्सपायर ऑन थर्सडे. अभी ये लॉजिक ही जब आपको पता नहीं है तो उसमें खेल क्यों रहा? ट्रू. द मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि पब्लिक गेट्स ट्रैप्ड ड्यू टू एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन. आपको मार्केट में आना है सबसे पहले एजुकेशन दो, अवेयरनेस लो. दे आर एजुकेटेड, आप मार्केट में डील कैसे होती है, फ्लक्चुएशंस कैसे होते हैं, व्हाट इज अ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, आप किस हिसाब से मार्केट चलती है उसका पूरा नॉलेज लो. लेकिन एजुकेट होने के बाद एंटर द मार्केट. हम एक नॉर्मल चीज करते हैं कि भाई आई एम अ software engineer by education. Then I've done my master's and then entered the business of doing the courses and all that. I've spent my almost more than 15 to 20 years on this thing, for getting myself or becoming a software engineer. And then I've worked with a company who was into manufacturing of software and all that. Developing like softwares. मैंने अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए लाइफ के 10 से 15 साल दिए और मार्केट में आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे कल पैसा आने से मैं आज ला रहा हूँ, मुझे कल इसको प्रॉफिट होना चाहिए. इट्स नॉट पॉसिबल. आप हर एक चीज को करने के लिए नीड टू गिव टाइम टू दैट थिंग. यही ट्रैप में लोग फंसते हैं. सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि भाई फॉलो हो गया, माई फ्रेंड उसका मशीन इसलिए तो भाई मुझे कल मशीन चाहिए. सामने क्या आता है, या आप लोन दो या मार्केट से पैसा निकाल, मार्केट में पैसा डालते हैं, एंड द ट्रैप ऑफ मार्केट स्टार्ट्स ऑन एंड ऑन एंड ऑन. इसमें बहुत सारे ट्रैप्स हैं. देयर आर मेनी एग्जांपल्स. हम लोग अगर करने में मैं सुबह तक आपको एग्जांपल देते रहूंगा, एंड द थिंग वुड बी दैट इट विल गोइंग ऑन एंड ऑन. ओके, So we can safely say that markets
मार्केट में कोई फेवरेट नहीं होता, देयर इज नो फेवरेटिज्म, इट पनिशेस द एरोगेंस एंड इट रिवॉर्ड्स द डिसिप्लिन. Exactly. Exactly. Right. Discipline should be must in the market. अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है और आप arrogant हो and you always sort of just a bit मैंने दी है, I have taken the trade. The trade should be in my favor only. That the market is going to punish you. Market अपने हिसाब से ही चलने वाला है. अगर उसको जाना है 2500 तक जाना है, 2600 तक जाना है, वो जाएगा. नहीं जाना तो नहीं जाएगा. वो क्यों जाएगा? आपने ऐसा नहीं है कि आपने सोचते रिलायंस ने नहीं लिया, आपने सोचा के नहीं लिया तो आप ये जाएगा. वो तो डाउन नहीं जा सकता है. और लोग सबसे बड़ी चीज ये करते हैं, इफ दे फाइंड आउट कि 2000 में रिलायंस सुटेबल टू मी, और जब रिलायंस 1500 हो जाते तो बोलते ये क्यों हो गया, जल्दी निकलो. और द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कुछ भी ऐसा नहीं मिलते कि 2000 में रिलायंस लेंगे, 1400 में नहीं लेंगे, वापस 2200 में वापस लेंगे. व्हाट लॉजिक? कोई लॉजिक के बिना अगर आप इस फील्ड में आओगे तो भी एंटरिंग इनटू लॉसेस होंगी. तो लॉसेस चाहिए तो आप अपने आप आ जाओ, एजुकेशन लेके आओ तो लॉस नहीं होगा, वरना एजुकेशन नहीं होगा तो लॉस इज गारंटेड. प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है. मार्केट में सस्टेन करना है तो लॉसेस टू बी सस्टेन. आप लॉसेस को कंट्रोल कर सकते. Very well said. So as we can see from the conversation so far that Mr. Hardik is a great storyteller. So let's shift our focus to the storytelling part now. So can you narrate a real life moment in which your psychology made or drove a deal for you? Ma'am, during my startings, when psychology, I have been into market since 2002. When the other NSC was starting, those were the times when shift data issues were implicated, ethical product issues were involved, Y2K format were into market, 2008 का सब correction, वो सब time में I was like career was started basically. I was seeing the Nifty going from 0 to 25,000, 26,000 things when you should. Sensex from to 3,000 to say rather 80,000, 83,000. This was my history of my career, rather I would say. My life in stock market. After calculation that I was called, I'm seeing many of the cases where people are making money, but the equity rotate if the person is getting invested, अगर वो invested है and he's been invested, the market rewards. आप ऐसे बहुत सारे केसेस है, जैसे राकेश जूटन वाला का आप केस एक ले लो. राकेश जूटन वाला, he had bought Titan something out 20-30 rupees, which gave him a wealth of more than 25 to 30,000 crore rupees. अब वो क्या है, मतलब एक दिन ये हुआ कि भाई उन्होंने शुरू किया बिजनेस, ही bought Titan 4% लिए, 5% लिए, 6% लिए. He was one of a huge investor of Titan. Titan went on and on and on. 2003 when the IPO was launched, at that time he was an investor of Titan. He bought Titan shares. And when did he execute the same? Say after 2024, 2025, post-corona. हम 10 पैसों पे का पूरे 15-20 साल उसको दिए मार्केट तो. The logic वही था, he was an investor along with a trader. That market is rewarded for profits. Incredible. So we can clearly see the power of emotional control. It's panic versus discipline. Exactly right. Correct. Emotions has no place in the market, rather in business nor in market. Emotions are useless. आप अगर इमोशंस से घर चलता है, market नहीं चलता. And that's why we said that market is a perfect, not a white. So sir, now there's a question in my mind, like how do we blend psychology with market trading strategy in real life? But non-strategies and psychology are like husband and wife. 50 class. आप लाइफ में हस्बैंड के बिना वाइफ नहीं चल सकते, वाइफ के बिना हस्बैंड नहीं चल सकते. उसी तरह से दोनों के बिना मार्केट में यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर. टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर सबसे पहली चीज ये है कि आपके साइकोलॉजी शुड on the top priority. आपके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल होना चाहिए आपका. मार्केट चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट 500 पॉइंट अप जा रहे तो मुझे कुछ नहीं हो रहा है, आई एम फाइन. मुझे
जब तक मुझे अपने हिसाब से ट्रेड नहीं मिलेगा, मैं नहीं लूंगा, मतलब नहीं. Either my way or sky. There is no third way. If I want to trade in my way, then only I'm taking trade high now. And वही जब तक स्ट्रेटेजी की वही साइकोलॉजी जब तक आप में डेवलप नहीं होती है, तब तक लॉस होना गारंटी है. आप कुछ भी आप रेट पे, कोई भी रेट पे आप कोई परचेस कर रहे हो, आपको वहाँ पे आप मार्केट में आपको ऐसा दिख रहा है कि भाई मार्केट इंडेक्स XY लेवल यहाँ से ऊपर जा रहा है, आप ऊपर देख रहे हैं, जबकि मार्केट में वहाँ पे कहीं ना कहीं पे थकान आती करेंगे. आपको ट्रेड क्या दिख रहा है कि भाई यहाँ पे देयर इज नो ट्रेड, बट साइकोलॉजी आपको ऐसा माइंड सेट कर देती है कि आपको एक फॉर्म ऑफ फैक्टर हो जाता है, फिर मिसिंग आउट कि भी सब कमा रहे, मैं दोस्त तुम्हारा मैं भी कमाऊंगा, एंड यू गो एंड टेक अ ट्रेड वेयर देयर इज नो ट्रेड. एट द एंड ऑफ द डे यू एंटर इनटू लॉसेस. जब तक साइकोलॉजी आपकी क्लियर नहीं होती है, तब तक देयर इज नो ट्रेड. तो उसी हिसाब से अगर आप स्ट्रेटजीज को पकड़ो, तो स्ट्रेटजी क्या कहती है कि भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिस हिसाब से मार्केट चलती है, अगर मार्केट में सपोर्ट पे है एंड द एक्शन इज शोइंग, प्राइस एक्शन इज शोइंग दैट मार्केट विल गो अप फ्रॉम इट, तो आप स्ट्रेट देखो, स्ट्रेंथ देखने के बाद वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम देखने के बाद यू एंटर इनटू द मार्केट इन द फुल पोजीशन. आप तेजी में उसी हिसाब से रेजिस्टेंस पे, एंड रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट ये कहते हैं कि वीकनेस आपको दिख रही है, वॉल्यूम देख पर इनकम होता जा रहा है, तो आप उसमें मंडी में करें और उसको एकदम पुट पोजिशन. वही टेंडेंसी को साइकोलॉजी के साथ अगर आप ठीक बैठोगे, then only there's things wherein you can earn a good amount of money. There are many strategies we are teaching, like हम लोग बोलते there are all time money, जैसे हमने स्ट्रेटेजी निकाल हुए जिसको हम लोग all time money बोलते हैं. आप ATM पकड़ो तो ATM में कभी भी आप जाओगे तो वहाँ पे आप ATM का ना पैसे भी निकलेंगे अगर अकाउंट में है, तो नहीं है तो बात नहीं. उसी हिसाब से मार्केट को लोग अकाउंट बोलते हैं और उस वक्त अकाउंट यानी अपनी स्ट्रेटेजी उतारते हैं विद साइकोलॉजी. ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं which we have developed it out, इसमें से मार्केट में सब लोग कभी भी डाले, अगर वो फॉर्मेट या वो फॉर्मेट अगर मार्केट में बैठ रहा है, जो हमारा ATM का जो बेसिक कॉन्टेक्ट है वो अगर बैठ रहा है, एंड वही साइकोलॉजी में आप बैठ रहा है, then you can go, you can earn money. 100 में से 90% केसेस ऐसे होंगे when you will be making money. बाकी 10% तो भगवान मालिक है किस सिस्टम, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो. या स्मार्ट मनी को पता है मार्केट कहाँ जाएगा, या FS को पता है, या DS को पता है जो खींच रहे मार्केट को. मैं ऐसा I'm not commenting that thing that they are on the market, but the money, the number of amount and crores of money which they are investing literally goes down. Very true. So it can be said that you don't have to fight your emotions or psychology, but you have to design your strategy around them, with them, in combination. Fighting is never possible with the market. जब भी आप फाइट करोगे, जब भी जीत लेकर बैठोगे, मैंने ये ट्रेड लिया तो वो सही है, I took a right thing. अगर मार्केट आपको पनिश करेगी, पनिश अगर आप नहीं समझ सकते हो कि आपने जो ट्रेड लिया तो वो गलत, you are wrong. You need to accept that you are wrong. अगर वो चीज आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, the market is going to punish you. आप कितना जल्दी आप 10 लाख लेके आए हो, 1 लाख लेके आए हो, मार्केट में अपनी स्ट्रेटेजीज, अपनी साइकोलॉजी के साथ आप अच्छी साइकोलॉजी के साथ आप रहोगे, then the thing will be that you'll be able to go long and you'll be able to earn a good amount of money. वरना सेबी के डेटा तो यही 10 में से 9 people, 100 में से 91 of them are losing their money. 91 सभी थोड़ा increased हुआ, people are getting educated, तो थोड़ा मतलब decrease हुआ, and it is that 89% of people are losing money. No का भी क्या हो गया है कि जो वो कमा रहे हैं मार्केट में. Terms and you need to strengthen your education. आपको अपनी mindset, अपना knowledge, अपने education को दिन ब दिन आपको उसको क्लियर करना पड़ेगा. You need to furnish it. उसको बोलते हैं ना, वो हम लोग अपने जो ancestors अगर अपनी बात करें तो बोलते रहते सोना कब बनता है, जब तक वो लोहे को आप जब तक वो पिघलेगा नहीं तब तक वो लोहा शेप नहीं लेगा. उसी हिसाब से आपको अपने आप को एजुकेट करके अपने आप को वो उस पर चला कि you need to beat out, become a proper trader. Mr. Hardik, we are almost to the end of our conversation session, which I don't want it to end
because here we have Mr. Hardik Kotecha with market lessons and life lessons all together. So can you share anything, any key takeaway for our viewers? Right. And reverse market, the market is all about. When I joined the market, I used to listen that ये सट्टा है. अर्शद मेहता के केसेस हम लोग सुनते थे, केतन पाय के केसेस हम लोग सुनते थे. और it was like कि भाई मार्केट में पैसा डालना है तो सच्चा ही नहीं है. With market we always, and I always learned that market is not a सट्टा, it's not gambling. आप लाइफ में अगर 10 साल, 15 साल, 20 साल अपने चला के एजुकेशन लेके मैच्योरिटी लेवल लेके अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, उसी हिसाब से मार्केट को टाइम देने के बाद उससे लेसन्स लियो. लेसन देने के बाद उससे गेट एजुकेटेड. मार्केट कैसे काम करती है वो सब चीज़ें सीखो. एंड देन यू कैन गो आउट विद अ गुड फॉर्मेशन कि जहाँ से आप पैसा कमा सकते. मार्केट में लोग कमाते हैं. Many of them have made money. There are ample of examples wherein you will find that people have made money like anything. ऐसा बहुत बताए हुए हैं. नहीं बताया ऐसा नहीं है सबने लॉसेस किया, वैसा भी नहीं. There are huge examples from whom you can find that they will make money. But the thing is, जब तक आप उस एग्जाम्पल में फिट नहीं होते, जब तक आपकी साइकोलॉजी उसमें फिट नहीं होती है, डोंट एंटर इनटू अ ट्रेड. सबसे बड़ी चीज़ है, डोंट एंटर इनटू अ ट्रेड विथ द रॉन्ग साइकोलॉजी. जब तक आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर न हो कि माई ट्रेड शुड बी द माई वे, और आई डोंट वांट टू से कट द ट्रेड मत बी. Educate yourself. That's the main key lesson of becoming a successful trader. Right. What a powerful advice, sir. So listeners, remember that trading is not just charts and numbers. It's an inner journey. So if you can manage your mind, ultimately you will build the market. True, man. Perfect way. Thank you so much, Mr. Kotecha. This was a very valuable conversation, and it was a reality check for people who enter the market, especially for the traders, who enter the market with zero awareness and 150% of some millions expectations. Thank you so much, sir, for clearing the air around the psychology combining with market. Pleasure, man. Good. I hope today's episode was an eye-opener for you. If you loved the episode, do not forget to hit the subscribe button, like, share, and give us a feedback on what you feel and what you think about it. And we'll be back in no time with another exciting episode for you. Thank you. I'm your host, Rachna Pandey, signing off for today. Thank you.